बच्चों कैसे हैं? बढ़िया। चलिए होप सब बढ़िया होगा। और आप लोग लास्ट सीडी पे देखे होंगे एंड इन दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. So I'm going to carry forward that topic now. Okay, so let us have a small revision. You know that this line, okay, which is actually horizontal line, we call this line as x-axis, right? X-axis is actually horizontal line, okay, and this line is y-axis, okay. Y-axis is vertical line, correct, and this is the point where x-axis and y-axis intersect. This line, this point you call as origin, okay, and origin we basically denote as 0, 0. Clear? And my dear student, this entire plane is called, नाम याद रखिए, this is called Cartesian plane. What we call this as Cartesian plane, correct? Now in this entire plane, each point, I told you, each point we can locate with the help of the address, okay. So each point has got a specific address, and this address we call as coordinate. Clear? So whatever point you have in this plane, that point has got address which mathematically we call as coordinate. Clear hai? Every real number can be located inside the Cartesian plane, okay. Now you know that I told you last class, this is first quadrant, okay. This is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant, correct. Now one more question comes here. In how many quadrants this entire plane is divided? By the x-axis and y-axis. In how many parts? The entire plane is divided into 4 parts. This is part 1, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Clear? Now every quadrant has got a sign convention, okay. For the first quadrant it is actually plus comma plus. For the second quadrant it is actually minus comma plus. This point is very important. Third quadrant it is minus comma minus, and the fourth quadrant it is plus comma minus, okay. कोई भी चीज़ स्टूडेंट रट्टा नहीं मारना है, सब चीज़ समझना है. Even this sign need to be understood how it came, ठीक है. Now before into that I told you this is called coordinate of a point. X, y को क्या बोलते हैं? Coordinate of the point, where this x will ask you to move either left or right. Last class I told you, if x coordinate is positive, move right. If x coordinate is negative, move left, right. Next is y coordinate. Y coordinate asks you to either go up or down. So if it is positive, go up, and if it is negative, come down. और ये जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत कॉमन सेंस है, बहुत कॉमन सेंस वाला भी है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको राइट जाना है, राइट मतलब क्या होता है? सही, और सही मतलब पॉजिटिव. यू नीड टू मूव लेफ्ट, लेफ्ट हैज़ टू बी नेगेटिव, ओके. नेक्स्ट, you are going up,
So when you are going up means what? Progress in life, and progress in life is positive. You are going down, okay, you are not feeling well, you are going down, then that means the sign convention has to be negative. So this sign convention is very scientific also, very emotional also, right? Chaliye. So once again, if x coordinate is positive, move right. If x coordinate is negative, move left. If y coordinate is positive, move up. If y coordinate is negative, move down. Clear hai? And the starting point is origin. This all I told you in the last class. How the sign convention came? Now let us understand. Suppose you want to land here. आपको यहाँ पहुँचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचना है, तो ओरिजिन से कैसे पहुँचेंगे? सीधा ऐसे जाएंगे? नो, रॉन्ग मूवमेंट. ओके, यू विल गो अप and you will go right. No, this movement is also incorrect, because from the origin your first move should be left or right, second move should be up or down. Okay, दिमाग में रख लीजिए, आपका ओरिजिन से जो पहला मूव रहेगा वो लेफ्ट या राइट ही होना है. आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते. लेफ्ट या राइट जाने के बाद आप जिस पोजीशन में खड़े हो वहाँ से आपको ऊपर या नीचे जाना है. यानी सपोज दिस इज ओरिजिन, राइट? द फर्स्ट मूवमेंट इज लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एंड आफ्टर लैंडिंग दैट पॉइंट द सेकेंड मूवमेंट इज वर्टिकल मूवमेंट. ओके, दैट मीन्स फ्रॉम द ओरिजिन you will have horizontal movement, then where you land from that place you have vertical movement, right? This horizontal is called left right, and vertical movement is called up down. बस इतना याद रखिए. समझ में नहीं आएगा मत सोचिए, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत आसान है सब, लेकिन अपने लॉजिक बटन को ऑन रखिए, ठीक है? जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है ना, आपको की डालने के बाद घुमाना पड़ता है, ओके? उसी तरह से आपको लॉजिक बटन ऑन रखना पड़ता है अगर आपको मैथ्स समझना है तो, करेक्ट? चलिए, वंस अगेन हैव ए स्मॉल रिवीजन. तो फ्रॉम द ओरिजिन द फर्स्ट मूवमेंट इज लेफ्ट राइट विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. आप जहाँ पहुँचते हो, सपोज यू आर रीचिंग हियर, फ्रॉम हियर अप डाउन विच इज वर्टिकल मूवमेंट, करेक्ट है? तो आप इसको HV रूल बोल सकते हो. क्यों HV रूल? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल. अदरवाइज यू कैन कॉल लेफ्ट राइट अप डाउन रूल. लेफ्ट राइट और अप डाउन रूल. तो आपके ऊपर में क्या सोचना है, ठीक है? चलिए ना फटाफट आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम. सो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ओके, लेफ्ट राइट. सपोज आई वांट टू लैंड हियर, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक राइट मूवमेंट इज पॉजिटिव. After landing you have to go up movement is again positive. So you got this positive. So any point, any coordinate which is like 2,3, 1,2, 4,6, 10,8, देखिए इसमें x एक्सिस में भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव है. then you will land here first quadrant. Suppose you want to reach second quadrant, what you will take? Don't go up first. I told you the first movement is left right movement, so you have to come left, and I told you left के लिए साइन क्या होगा? नेगेटिव, and you will go up के लिए साइन क्या होगा? पॉजिटिव. So my dear student, माइनस प्लस. सपोज यू वांट टू रीच थर्ड क्वाड्रेंट, ओरिजिन से शुरू करेंगे, फर्स्ट आएंगे लेफ्ट, ओके, दैट इज नेगेटिव. देन यू विल गो डाउन मीन्स नेगेटिव. So minus. You want to reach here from origin, you will take this right and again you will come down. Down is negative. So ये positive इधर, ये negative इधर. So like that, by looking the sign of the coordinates, you can tell to which quadrant it belongs. Clear? चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया. Next is you have to tell one more thing, that is x, 0. I told you last class, any point which lies on x axis will have y coordinate 0, and in y axis you have point like this 0, y. 0, y means any point which lies on y axis
has what? Has x0. So any point which, याद कर लीजिए अच्छे से, any point which lies on x-axis has y0, any point which lies on y-axis has x0. Clear? चलिए next. So this all you understood, and this is origin which is 0, 0. Both x coordinate and y coordinate is 0. Clear? Okay. Now let me throw you some questions on you. Correct? The first question is, in how many parts the plane is divided by the x-axis and y-axis? The answer is 4 parts. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay? But actually, if you see, the entire plane is divided into 6 zones. Now you will be telling how 6 zones. So this is first zone, this is second zone, third zone, fourth zone, and the point which lies on the x-axis doesn't falls on any of the quadrant, right? So this x-axis is the 5th zone and this y-axis is the 6th zone, because the point which lies on y-axis doesn't fall on any of the quadrant. So my dear student, in broad you can say that the x-axis and y-axis divides the plane into 6 zones, namely first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, the x-axis and the y-axis. Clear? But if it is asked in your exam, in how many parts, in how many zones the plane is being divided by x-axis and y-axis, then you can tell the answer 4 zones. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, because it is written in your summary part of the textbook in NCERT. But actually, if you see, the entire plane has been divided into 6 zones. Okay? तो लेकिन आपको एग्जाम में आए तो 4 जोन ही लिखना है, ठीक है ना? Now next is, so this is clear. Okay, now please kindly note this down. Okay, and WhatsApp me your notebook. I want to see how you are writing. Correct? चलिए. Now this you have understood. Next, my dear student, I am going to write some points and you are going to tell to which quadrant it belongs. Okay? Now before that, I will read the summary part. I am reading the summary of your textbook. Let us connect the summary part with what you have learned here. Okay? Now you can also take your textbook. Come on, my dear student. Take your textbook and go to page number 65. Page number 65. So summary, first summary says that to locate the position of an object or a point in a plane, we require 2 perpendicular lines. We require 2 perpendicular lines. एक बार चेक कर लो बराबर आता है क्या? To locate the position of an object or a point in a plane, we require 2 perpendicular lines. One of them is horizontal, another is vertical. So this is the horizontal line, this is the vertical line. These 2 lines helps you to locate any point in the plane. I hope the first point is clear. Second point, this plane is called Cartesian. I told you the name of this plane is called a Cartesian plane, or you can call it as a coordinate plane. इसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं coordinate plane. Okay? And third is the horizontal line is called x-axis. You know, this horizontal line is x-axis and the vertical line is y-axis. Third. Fourth point, the coordinate axis divides the plane into 4 parts called quadrants. This is what is written in the textbook. But actually, if you see, the plane is divided into 6 zones, 6 parts. Okay, one is x-axis, another is y-axis as well. Okay, my dear student, this is the 5th point. Clear? The point of intersection of the axis is called origin. So see,
एक्सिस इज सिंगुलर। बच्चों ध्यान से देखिए, एक्सिस मतलब होता है सिंगुलर। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें और एक वर्ड आता है एक्सेस। एक्सेस मीन्स प्लूरल। सो व्हेन आई से बोथ कंबाइनली एक्स एंड वाई, एक्सेस। ओके, सो दिस एक्सेस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। चलिए इसमें आपके क्वेश्चन में पूछता हूँ, इन हाउ मेनी पार्ट्स द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन? In how many parts the plane is being divided by x-axis? Forget about the y-axis. इसको भूल जाइए। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये प्लेन है आपका, केवल मैंने बनाया x-axis. So x-axis divides the plane into 2 parts, up and down. Clear है logic? But actually if you see, it is dividing the plane into 3 parts. How the 3 parts? The up, the down, and on the line. Okay, now in how many parts the plane is divided by y-axis? How many parts? Again 2 parts, left, right. But if you take this line as well, then it will be in 3 parts. Clear? Now if I draw both x-axis and y-axis, now the plane is being divided into what? 4 parts. 1, 2, 3, 4. Okay, how this 4? This is right up, this is left up, this is left down, this is right down. 4 parts, and this is 5th part x-axis and this is 6th part y-axis. Okay, समझिए, आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमेशा समझना आराम से, बिकॉज यू शुड गिव टाइम टू योर ब्रेन टू डाइजेस्ट द नॉलेज। कोई हड़बड़ी मत करिए समझने में, और बाहर से नॉलेज मत लीजिए। ओके, बाहर से बस तरीका लीजिए, नॉलेज आपके अंदर में है, वो बाहर आएगा। क्लियर? चलिए मैं आपको आगे और बताता रहूँगा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या है। दिस इज 5th क्वेश्चन इज क्लियर। Now, 6th point is a very beautiful point that I will explain you. And the 6th point says that the distance of a point from the y-axis is called x coordinate. 7th point, that also will explain you. 8th point, I have already explained you. What is 8th point? The coordinate of a point on the x-axis are of the form x comma 0. I told you x comma 0 is the coordinate of a point which lies on x एक्सिस। ओके, यानी जो भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे उसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। याद होगा आपको, मैंने इंडिया चाइना का कहानी बताया था, राइट? देख लीजिएगा, लास्ट CD में है, लास्ट रिकॉर्डिंग में है। नाउ उसके बाद है एंड द पॉइंट दैट लाइज ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y। तो ये भी एकदम क्लियर है। 9th पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0, मैंने बता दिया था ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, है। 10th पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म ++ in the first quadrant. This entire 10th point I have explained you. So this in first quadrant the sign convention is +, so if x coordinate is plus, y coordinate is plus, that point will fall in the first quadrant. And here if the first x coordinate is negative, and second coordinate is positive, then those point lies in second quadrant. If the, come on tell me, घर में बैठे बैठे बोलिए क्या है, x coordinate is, बोलिए कोई बात नहीं, पेरेंट्स को सुनने दीजिए, बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। तो क्या है ये, x coordinate is negative and y coordinate is negative, then you can say that the point lies in third quadrant. Correct? अब ये आपको बोलना है, अपने घर में बोलना है, बताइए। क्लियर? आवाज़ नहीं आया होगा, करेक्ट? तो क्या है, इफ x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, देन दोस पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? नेक्स्ट 11th पॉइंट, if x is not equal to y, then x comma y is not equal to y comma x, and इसका मतलब ये है
coordinate 2, 3 is not equal to 3, 2. 2, 3 is not equal to 3, 2. Correct? It cannot be equal also ना, कैसे equal होगा? 2, 3 मतलब from यहाँ से 1, 2 हो गया, 3 positive up, 1, 2, 3, you will reach somewhere here. Correct? 3, 2, come on, 1, 2, 3, you are reaching here, and 2, 1, 2, you are reaching somewhere here. That means if you interchange x coordinate and y coordinate, then the point also gets changed. The point also gets changed. Clear? तो बच्चों ये सारा मैंने बता दिया आपको. अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पॉइंट, वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6 and 7. पॉइंट नंबर 6 and 7, राइट? अब देखते हैं. इसको अच्छा से बना दीजिए बोर्ड में, नोटबुक में, सॉरी. फिर मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप लोग. और मेरा नंबर है 9933227796. सॉरी, ये तो मेरा फ़ोन नंबर है. मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9732227886. तो ये नंबर में आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए आपका नोट का फ़ोटो लेके, और मैं एक बार उसको देख लूँगा. ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट है व्हाट इज पॉइंट नंबर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. पॉइंट नंबर 6 and 7. Okay, so point number 6 says that the distance of the point from the y-axis. Now, very important point, x comma y. Okay, so in this x comma y, this x has got two names. One you can call it as x coordinate. Okay, or you can call this as a special name is there, abscissa. What is that? Abscissa. This y coordinate we call it as simple name y coordinate, and it has got another name, that is what? Ordinate. Ordinate. And this together is called, coordinate of a point. Clear? Now I am drawing. What is the name of this plane? Come on, tell me. It is called Cartesian plane. Cartesian plane. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. थोड़ा सा रिवीजन हो जाए. 1 2 3 okay. Now 2, 3. I am going to plot a point 2, 3. Where it will come? This is origin. 1 2. Okay, right movement. Then after right movement, up or down. 1 2 3. So you will reach a point, this my dear student, which is 2, 3. Clear? Now अभी देखिए, ऐसे मैं कर देता हूँ और मैं ऐसे कर देता हूँ इसको. ठीक है? If you see, this is 2 unit, correct? So this has to be 2 unit. So this point you will call as 2 unit. What is 2 unit? This is, and this is what? X coordinate. Okay, so what is x coordinate? X coordinate or abscissa is the distance of the point from the y axis. कोई confusion नहीं भाई, बिल्कुल मत घबराइए.
मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज 2,3, ओके, दिस इज 2, and this is 3. Okay, if this is 2, this has to be 2, correct. What is 2 unit? 2 unit का नाम क्या है? क्या है? Abscissa है. तो what is abscissa? Abscissa is the distance of the point from the y-axis. Okay, so if anybody asks you what's the definition of abscissa or x coordinate, you can say that it is the distance of the point from the y-axis. Similarly, can you answer what is ordinate? What is ordinate? So this 3 is ordinate, this 3 is ordinate. What is this 3? 3 is the distance of this point from the x-axis. So my dear student, this is ordinate, 3 unit, and this is abscissa. Abscissa is nothing but x-axis, ordinate is nothing but y-axis. So what is ordinate? Ordinate is the distance of the point from the x-axis. तो यानी आप एक्सप्लेन कर रहे हो y कोऑर्डिनेट को, ठीक है, लेकिन आपको आंसर में बोलना है एक्स कोऑर्डिनेट. तो व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस. क्लियर? एंड व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस. यही आपका पॉइंट नंबर 6 और 7 में लिखा है. क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो वंस अगेन दिस एक्स कोऑर्डिनेट हैज़ गॉट द नेम एब्सिसा. इसी तरह से नोट में लिख दीजिए और मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है ना. और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं है, ऑर्डिनेट ही है यहाँ, लेकिन थोड़ा स्पेशल नाम दिया है एब्सिसा. क्लियर है? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सिसा? एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस. देखिए, चलिए एब्सिसा की जगह में मैं बोलता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट. तो डिफाइन एक्स कोऑर्डिनेट. X coordinate is the distance of the point from the y-axis. Okay, and what is y coordinate? Y coordinate is the distance of the point from the x-axis. Yani, if you are explaining x coordinate, okay, explain with the help of y-axis. If you are explaining y coordinate, explain with the help of x-axis. Clear? So like that you can explain what is x coordinate or abscissa and y coordinate or ordinate. Clear? समझ में आ गया होगा. समझ में नहीं आया तो कॉल करिए, मेरा नंबर आपके पास में है. माय नंबर इज़ 99332277, सब डबल है, लास्ट में डबल नहीं है, 96. ओके, बट माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9732278786. क्लियर? So my dear student, this is the concept of ordinate, abscissa, or this thing. Now I am rubbing this and we will